शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति का जो कारवां है वो कारवां अब दक्षिणी भारत में भी पहुंच चुका है। आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में बाबा साहेब के आंदोलन का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक प्रभाव तो हमने देखा, लेकिन उनका जो धार्मिक प्रभाव है वो इस समय दिखाई दे रहा है। हम हैं दक्षिणी भारत की बौद्ध विरासत की बड़ी ऐतिहासिक नगरी कांचीपुरम में, और कांचीपुरम का ये है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर इनकी प्रतिमा का स्थल, जहां से धम्म दीक्षा रैली निकल रही है। इस रैली के साथ आपको जोड़ते हैं। इन द धम्म दीक्षा रैली इन कांचीपुरम, आई हैव विद डॉक्टर भारती प्रभु एज अ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस रैली. What is your mission and what is your vision to this rally? So we are conducting Buddha Jayanti in Kanchipuram. So actually Kanchipuram is the ancient Buddhist town. Here Manimehalai and Bodhidharma, Dharmabalar lived in that Buddhist town. So in the name of Buddha Jayanti, we are organized the conference, the name of Buddhantis Dhamma. The Buddhantis Dhamma is our world Buddhist Dhamma text. So Baba Saheb gave the essence of Buddhism, the essence of Tripitaka in the name of Buddhantis Dhamma. But people not aware about the importance of Buddhantis Dhamma. The first aim, we need to create the importance of the Buddhantis Dhamma. The second things, we need to celebrate our Buddha in the ancient Buddhist town. The third, we are starting People our... knows that the Kanchipuram is the city of religious city of South India. Yeah, not only the religious city, it's the Buddhist religious city. The Kanchipuram is the head of the Buddhism in the ancient period. Thousands bhikkhus, bhikkhunis came. They are studied here in the Kanchi University. The Professor Dharmabalar, the Professor Bodhidharma. So we need to celebrate our ancient identity. So that's why our Buddhist Fraternity Council and Ashokar Ambedkar Dhammayatra Kanchi Committee, we are organized this Buddhist conference. This is our initiative program. We are started from the ancient Buddhist town in Kanchipuram. Then we are moved around Tamil Nadu in every month in the Dhamma Diksha, Dhamma Rally, the importance of Buddhantis Dhamma. If I want to take message for my viewers from Kanchipuram at the organizer of Buddhist Fraternity Council, what would be it? Because every Indian citizen should aware about our ancient Buddhist town in the Kanchipuram. Because the Kanchipuram is the head of the Buddhist. Now it is become head of the other religious. But the Kanchipuram is the ancient head town of the Buddhist. So our viewers, our Indian citizens, they should know about the importance of Kanchipuram. Like Nagpur. Nagpur is a modern Kanchipuram. Kanchipuram is an ancient Nagpur. So here everything started from here about the Buddhism. Our Buddha Bhikkhuni Manimehalai was worked here, and 1,000 Bhikkhunis was lived here. 1,000 Bhikkhuni was lived here. This conference happening here. This is the Yellow River. The Yellow River, it's called Vegavadi River. The Vegavadi River used by the Bhikkhuni Manimehalai.
Here one Tayaraman pond. Tayaraman pond is there, especially they are built for bhikkhunis. The only bhikkhunis used that Tayaraman pond. So many and Egamreswarar Koil and Varadaraja Perumal Koil. You know the Varadarajan has become a Varadarajan. Yesterday they are celebrate Varadaraja Perumal festival. The name of Varadaraja Perumal, but they are historically they are celebrate Buddha only in the name of Hindu Madam. So now the next day we are as a Buddhist we are celebrating same Varadarajan, the name of Bhagavan Buddha. So the person is one in the history, but the people are celebrating the different name. So we need to show that true to our world. Okay, thank you. You have connected with Dhamma rally from Kanchipuram. Bante Ukasavandami, Bante, if I want to take your message from Kanchipuram, what would be the message behalf of this Dhamma rally? திருப்பத்தூர் மாவட்டம் தென்னிந்திய சாக்கிய பௌத்த சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன். காஞ்சிபுரம் வந்து சிறப்புமிக்க ஒரு பழமையான பௌத்த நகரம் இது. இது காஞ்சிபுரம்ன்றது வந்து கண் சீவர ஆடையை தயார் பண்ண இடம். இது தயார் பண்ணது இங்கே ஆயிரக்கணக்கான பிக்குகள் இருந்த இடம். பழமையான புத்தர் நகர் இது. சீவரம் தயாரிப்பு ப்ரொடக்ஷன். அதனால் இது கஞ்சிவரம்ன்றதை வந்து காஞ்சிபுரம்னு பண்ணிட்டாங்க, பேர் மாற்றம். இதில் கஞ்சிபுரம் என்று சொல்கிறாங்க இந்த ஊருக்கு. அது இங்கே வந்து இந்த காஞ்சிபுரம் பட்டு तैयार பண்ண இடம் அதனால வந்து காஞ்சிபுரம் பேர் வந்திருக்காங்க. ओ अच्छा अच्छा, ये जो है वो इसका ये जगह का नाम है कांजीपुरम. वो कांजीपुरम में कांजीपुरम पट्ट जो वो साड़ी है ना इधर बना रहा है, इसके लिए इधर कांजीपुरम करके नाम आ गया. तो इधर तो बहुत लोग है इधर अपना ये कांजीपुरम में, तो उसके लिए अपना सामी लोग इधर अच्छा से रहता करके बता रहे हैं. इस पूरी बातचीत का सार ये है कि चीवर का जो निर्माण है वो निर्माण इस शहर में अधिकतम होता रहा और इसे कांचीवरम ऐसे इस तरह से इस शहर को जाना जाता है. और ये जो कांचीवरम है तो ये जो चीवर जो है ये बौद्धों के खास तौर पर प्रचारकों की दृष्टि से उनके
पहराव का हिस्सा है और जो भी भिक्षु होते हैं वो चीवर में होते हैं। तो चीवरों का निर्माण यहाँ होता रहा, प्रोडक्शन ऑफ चीवर वो यहाँ पर होता रहा और इसलिए इस क्षेत्र को कांचीवरम कांचीवरम ऐसे कहते जाते रहे। और अब ये यहाँ इस तरह के सिल्क और खादी जो कॉटन है इसका मिश्रित जो धागा होता है इसके साथ जो चीवर बनते हैं वो चीवर यहीं से बनते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि If I want to take your message from this city, what would be? It is a Kanchi, a big town. Regarding Dhamma rally, what would be your message? Regarding Dhamma rally, what would be your message? Kanchi is a Diksha place. Once upon a time, there are number of big lived in this area, but between the Brahmins are destroyed this bhikkhus. So now it is called Vradaraja Brahman. ओके, ये धम्म रैली है जो धम्म दीक्षा के निमित्त निकली हुई है। यहाँ रैली में जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Bante Okas Vandami, Bante, if I want to your message from Kanchivaram for the my viewers in regarding of this Dhamma Diksha rally. தம்ம சிக்ஷர ரேலியை பற்றி காஞ்சிபுரத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? காஞ்சிபுரம் வந்து பழமையான வந்து ஒரு புத்த நகரம். இங்கே வந்து தீட்சை எடுத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப புண்ணியமான செயல்.
ஆகையினால வந்து இங்கே வந்து எல்லாரும் கூடியிருக்காங்க, தீட்சை எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால் இது ஒரு போற்றக்கூடிய விவகாரம். Okay. Kanjivaram is an ancient city of Buddhism. So people are willing to come here to take Diksha. This is a special day today. Why? Because of Kanjivaram, ancient Buddhist city. No. Why this is the special day? Because the Kanjivaram, because of Kanjivaram, Yeah. special. Yeah. So the taking Diksha in Kanjivaram is a special. Is a special. Yes. Yeah, so what would be the message for my viewers This Kanjivaram, you know well known regarding to Dhamma Diksha? Regarding to Dhamma Diksha rally. rally. This rally organized by VCK and BSP parties. Buddhist Fraternity Council. Yes, Buddhist Fraternity Council main organizer. Yeah. And main participation is VCK, Vidudalai Siddhal Kachcha and Bahujan Samaj Party. Yeah. So the leaders are coming today here. Both leaders, Armstrong State President and Tirumavalan, one of the senior leader and chief organizer of the Vidudalai Siddhal. Okay, thank you. தவறலை தடுத்திடும் அறத்தினை வந்தேற்கிறேன் இரண்மனை விளைதலை தடுத்திடும் அறத்தினை வந்தேற்கிறேன் பொய்யொரு புகழலை தவிர்த்திடும் அறத்தினை வந்தேற்கிறேன் மனத்தினை மயக்கிய திரண்டிய தோன்றிடும் Sister, if I want the message for my viewers from the Kanchipuram, what would be the message from you regarding to this Dhamma rally? थैंक यू. शैल स्पीक इन हिंदी? Yeah. तो मैं मृदुला देवी यस फ्रॉम केरला. मैं अभी इधर ही आई तो कांचीपुरम आई तो बुद्धिस्ट फ्रेटर्निटी काउंसिल की तरह एक फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग बुद्धिस्ट दैट बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन. वो इट इज़ एक हफ्ता का फेस्टिवल है. तो दिस इज द लास्ट डे सेरेमनी and here brother Tol Tirumavalan is participating in the evening and morning we are conducting a rally here and why VCK, BSP and Buddhist Fraternity Council are joining hand to hand together to celebrate this event. Why? Because we are promoting fraternity to all the people because the word brotherhood है तो वो brother if I consider मैं आपको brother की तरह समझती है तो brotherhood वर्क करते हैं. मैं सिस्टरहुड में मैं वो सिस्टर को किसी मेरे सिस्टर अपनी सिस्टर और किसी दूसरों को मेरे सिस्टर की तरह समझने हैं तो सिस्टरहुड वर्क आएगा. मगर वी आर प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी माने मैत्री. वो मैत्री द वर्ड कमिंग ऑल द वे फ्रॉम बुद्धिज्म. दिस इज द बेस्ट मैसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू द वर्ल्ड. वी आर स्प्रेडिंग फ्रेटर्निटी माने मेरे को आपके साथ शायद लड़ाई है पर्सनली फिर भी एक मूवमेंट एक ही साथ जाने के लिए मेरी मन में फ्रेटर्निटी है तो भी मैं हम हमारा पर्सनल एनिमिटी नहीं वी विल नॉट माइंड. मगर एक मूवमेंट अच्छे होने के लिए फ्रेटर्निटी मन में है तो हम एक ही साथ जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट एंड best message Buddha has given to us. We are the followers of Buddha that we are spreading this message to the world. Namo If I want the 4 line of your poetry, Yeah. what would be? Which, sir? 4 line of your poetry.
I want to. No. I want 4 lines for your poetry. My poetry. Yeah. So that is it. That might be in one is in Malayalam. I will translate it into Yeah. English. Okay. So we the people don't know how to decorate God. We will never decorate God, but we never cheat God. We never cheat God. We are spreading the good values of humanity to the world. Okay, thank Jai you. Bhim, because that Dr. B.R. Ambedkar taught us. Thank you. Jai Bhim, Namo Buddhaya. മലയാളി Yeah. You can speak in Malayalam. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ബുദ്ധപൂർണിമ. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ബുദ്ധപൂർണിമയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ നാഗപ്പൂർ പോയിരുന്നു. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അംബേദ്കർ ആശയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധപൂർണിമ ആശംസകളും നേരുന്നു. Okay, thank you. If I want to take your message from the Kanchipuram regarding to this Dhamm Diksha rally. Yes, we people come from Kerala, Yeah. and we follow Buddhism for long time. And this rally, especially this rally regarding this Buddha Purnima, we just celebrate. We give the message to the people: peace, compassion, empathy, etc., etc. And we follow Buddha and his Dhamma. So Buddha, for at least his full time giving. He says dana, you're doing dana, and karuna, and peace, empathy, compassion towards the people. And so through this way, we can empower ourselves, we can be self-realized people like Buddha. We have the ambition to become enlightened. That's what we follow. The meditation, especially the meditation, we follow the meditation, we do the meditation. Through this meditation, we will be empowered, we will be peaceful, we will be calm, we have compassion, we have empathy, we self-motivated, wisdom, knowledge, everything. This is the path of life. Buddha showed his life, his path of life to us. So we should follow this. If we follow Panchashila, especially not killing, no sexual misconduct, not stealing, not toxic, not using any kind of drugs like this. Many pledges are there. When we follow these pledges, we become Panchashila. When we follow this, we will become true to our life, and we can do the Brother, how many people or how many families are converting in Buddhism here? here in Kanchipura. More than I think more than 10 lakh people are in Tamil Nadu. I think so. I'm from Kerala. Kerala itself more than 1 lakh people. 1 lakh people are there to follow Buddhism.
Yes. No, no, no. In Kanchipuram. Kanchipuram Dhamma Diksha ceremony. Ceremony. How many people are adopting Buddhism? Yeah, you mean Diksha, Dhamma Yeah, Diksha? yeah. Regarding this, many people came from different kinds of states. Yeah. And they follow and they do the Dhamma Diksha today. Okay, okay. Thank you. Thank you. What would you like to say? See, he doesn't know No, no, no. He can speak in Kannada. Kannada. Yeah. Only Malayalam. Okay, you can speak in Malayalam. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ബുദ്ധധമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങള്. ബുദ്ധധമ്മ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ കാഞ്ചീപുരം എന്ന ഈ മഹാനഗരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരു 20 പേര് ഇവിടെ വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വളരെ ഞങ്ങൾ ഈ കാഞ്ചീപുരത്തിലെ അംബേദ്കറിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളെയും ഇതേപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും അതേപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയധികം ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, അവനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബുദ്ധധമ്മത്തിന്റെ മെസ്സേജ് എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജ് പഞ്ചശീലം വളർത്തിയെടുക്കുക, അഷ്ടാംഗ മാർഗം വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പഞ്ചശീലം: ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലരുത്, നുണ പറയരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, വ്യഭിചരിക്കരുത്, ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് എല്ലായിടത്തെയും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധമതത്തിന്റെ സന്ദേശം. 8 അഷ്ടാംഗ മാർഗം: ശരിയായ ലക്ഷ്യം, ശരിയായ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട്, ശരിയായ വീക്ഷണം, ശരിയായ ഭാഷ്യം, ശരിയായ അവധാനത, ശരിയായ ഏകാഗ്രത, ശരിയായ പരിശ്രമം, ശരിയായ തൊഴിൽ, ഇതെല്ലാമാണ് അഷ്ടാംഗമാർഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. അപ്പോൾ പഞ്ചശീലവും അഷ്ടാംഗമാർഗവും ഫുള്ളായിട്ട് മുഴുവനായും പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ. ആ സന്ദേശം ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് നൽകാനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണപ്രകാരം എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ये जो धम्म रैली यहाँ से धम्म दीक्षा रैली के रूप में निकल रही है, कांचीपुरम में है हम, और इसी कांचीपुरम की रैली के साथ हमने आपको जोड़े रखा है. देखिएगा, भाषा जो भी हो, लेकिन उस भाषा के साथ वो भावनाएं हैं, वो शब्द हैं. If I want to your message from Kanchipuram for my viewers, what would be the message regarding to this Dhamma rally? The Kanchipuram is one of the historical place, Buddhist place all over the world actually. The heritage is almost 2000 years back. So much of masters like Dignaga, Dhammapala, Aravanadigal, Manimegalai, so much of Buddhist scholars, and one of the biggest university is in Kanchipuram actually. Is 8th place important. It's in India. Actually, Babasaheb Ambedkar actually chose this place for conversion before his die actually. He chose an important place in Chennai for a conversion after Nagpur. Is one of the places Kanchipuram, not Chennai. So this historical place have to take our culture back, Buddhist culture back, and do our counterculture movement what our Babasaheb give to as a task. So what my message for Kanchipuram is Buddha Dhamma is we need to take back our identity and our culture. This is the Buddha's Bhumi. This is a Bodhi land. What are the current situations are here? The current situation are there is so much of Buddhist identities appreciated by the Hindu peoples, the Hinduism, later by Shankaracharya philosophy of Vedanta. So right now a lot of people had the awareness
but the culturally doesn't have any molding of philosophy or identity right now. So we are taking an initiative to conduct this yatra to spread the message of Buddhism, Dhamma, and what the Baba Sahib mission was given to us. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Tudiyambi Buddham Saranam Gacchami Tudiyambi Dhammam Saranam Gacchami Tudiyambi Sangham Saranam Gacchami Tadiyambi Buddham Saranam Gacchami Tadiyambi Dhammam Saranam Ramani Sikapadam Samayami Sadhu 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 Vandami Setiyam Sappam Sarpatani Simpaditidam Charirigataru Mahabodhi Buddha Rupam Sakalam Sada ஜேபி நமபுத்தையா. இந்த மாநாடு வந்து முதல் வாட்டி வந்து நாங்கள் பௌத்தம் தம்முறை போனோம். ஒரு 6 மாநிலம் போனோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் ஒன்றா சேரணும், திருப்பியும் வந்து ஒரு பௌத்த ஒரு தேர் மாரி ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு நீண்ட நாளாக ஒரு ஆலோசனை பார்க்குறோம். காஞ்சிபுரத்தில் வந்து ஒருங்கிணைச்சு இந்த தேரை வந்து இன்றைக்கி அசம்பிள் ஆகிக்கிற எல்லாமே தமிழ்நாட்டிலேருந்து காஞ்சிபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, செஞ்சி, நெய்வேலி, கோயம்புத்தூர், தமிழர்கள் எல்லா மாநிலத்திலேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்துக்கிறாங்க. அனைவருக்கும் நம்ம பற்றி ஜெய்பீம். நன்றி. நன்றி சொல்வோம். ஆணும் பெண்ணும் சமம் என சட்டம் தந்த அறிஞருக்கு நன்றி சொல்வோம். நன்றி சொல்வோம். செஞ்சிலேருந்து வரேன், மொடியூர் கிராமம் மரியூஸ்லேருந்து வரேன். நான் வந்து இங்கே பௌத்த ஏறதுக்காக வந்திருக்கேன். ஏன்னா பௌத்த வந்து மனுஷனுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எந்த மனிதன் பௌத்தத்தை தழுவிக்கிறானோ அவன் தான் முன்னேறி போவான் கண்டிப்பாக. ஏன்னா எல்லா ஒழுக்கங்களும் பௌத்தத்தில் அடங்கியிருக்கு. அதனால் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் பௌத்த நெறிகளை நம்ம பயன்படுத்துதுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு நல்ல ஒழுக்கமுடைய மனிதனாக வர கண்டிப்பாக 100% வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லாருமே பௌத்தத்தை தழுவணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன்னா பௌத்தம் தான் மிக முக்கியமான ஆழமான ஒரு வெப்பன்னு கூட சொல்லலாம். அதனால பௌத்தத்தை தழுவணும்னு கேட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஜெய்பி. என் பேர் விஷாக்கா. நான் வந்து கள்ளக்குறிச்சியில் வந்திருக்கேன். தமிழ் யாத்திரை போயிருந்தேன். அங்கே போயிட்டு நிறையா விஷயம் கற்றுக்கிட்டு வந்தேன்.
அங்கே போயிட்டு தான் திருச்சியில் எனக்கு விஷாக்கான்னு பேர் வச்சாங்க. इस रैली में दक्षिणी भारत के लगभग सभी क्षेत्र के लोग हैं। वैसे ये रैली तो हो रही है कांचीपुरम में, लेकिन यहाँ केरल से लोग हैं, कर्नाटका से लोग हैं, तमिलनाडु से, पौंडीचेरी से है, सब जगह से दक्षिण भारत के जितने स्टेट हैं सभी स्टेट से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ धम्म दीक्षा का विधि भी होना है। अब इस धम्म दीक्षा में कितने परिवार शामिल है वो तो हम आपको धम्म दीक्षा का प्रोग्राम जब दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा।